Good evening, friends, on this Friday that now, we meet again. And today, we have the Steve Jobs of personal finance, Mr. Manish Chauhan, somebody who I have the great pleasure of knowing very closely, working with him on a little project, and somebody who has, really taught me the very basics of the way personal finance work, somebody whose blogs have inspired a whole plethora of individuals and professionals in the field of personal finance. So, today we're going to talk to him about insurance. अभी ऐसा लगता है कि आप इतने बड़े इंसान को लेके आए हो and you're going to talk very, very simple things. But that's the whole point, right? You need experts basically to break down the most complex things or things that are the most least understood. Sorry, so they're the things that are least understood are basically because somebody has not been able to tell you or teach you very well. So for that, you need some expert who understands these concepts inside out. So when I was thinking कि हमको इंश्योरेंस के ऊपर किसके साथ एक डिस्कशन करना चाहिए, कुछ छोटी बात करनी चाहिए, it was at that point in time I realized that there is nobody better than Manish Bhai because the way he can break things down, the way he can make things simpler, it's an art in itself. और ये जो एक आर्ट है, ये जो एक साइंस है, the way he can break it down, he can come to a solid conclusion is what makes things more enjoyable. So with that, let's start today's session, Insurance for Dummies. Thank you, Manish Bhai, for coming, taking your time out for this session. I think आपके busy schedule में ये time निकलना is a huge compliment for us. So first of all, really thank you for that. Thanks, Jinay. Thanks for wise words. It's always pleasure to talk to you. Let's start and let's get into the session. Really excited. Absolutely. So I just want to first understand कि सबसे पहले तो ये insurance होता क्या है? What is insurance? And why should a person take it? Okay. See, we all may have read about insurance online, अलग-अलग type के insurance. Can we do Hindi, English mix or Absolutely. दोनों language चलते हैं. Yes. Okay. So insurance we read a lot, and there is plethora of advertisements from on term plan and so many kind of policies and health insurance. But if someone has to understand the core meaning of insurance, I would say it is an answer to extreme optimism. And I'll break it down what it means. Every one of us are extremely optimistic about everything in life, right? Like after this call, we'll drive back home. I'll go to my house. We'll fly somewhere next week or next month, and we all think things will just we always extrapolate our life in future. And अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आगे क्या होगा? This is the general thing, right? Whenever we hear about any accident, whenever we hear about anyone passing away in insurance in hospital, anything bad happens, we always feel अरे ये दूसरों के लाइफ में होता है, हमारा तो नहीं होगा. This is the general thing, right? So there is always an extreme optimism in people's life, and insurance is answer to that. So because things can go wrong in future, insurance is to be bought for that event, which is very improbable. In a very, very general sense, I'm trying to make you understand. So whether you take life insurance, whether you take health insurance, where you take car insurance, job insurance, any insurance is to simply, take care of that extreme event, which people don't think it will happen in future. So, and the thing is that, insurance is a very funny product. It's a very interesting product because whenever you buy, let's say a product, you buy FD, you buy mutual fund, you always want the outcome, right? But in insurance, you are paying for something which you don't want, correct? जिंदगी भर आप पैसा उस चीज का दे रहे हो, उस इवेंट के लिए दे रहे हो जो आप चाहते हो हो ही नहीं, right? So if we specifically talk about term plan where the money will come to you when a person dies, people generally want to waste that money. People want कि ये पैसा चल जाए मैं मरूं नहीं और उसी का पैसा दे रहा. So I don't know if this is if I'm answering it in the right direction. Do you want that kind of like यही चाहिए था, right?
Yeah, absolutely. I think, इंडिया में कैसा होता है? I was just telling somebody, I mean, a couple of days back Yeah, in the office कि जैसे diagnostics हुआ for insurance, you're going for a blood test. yeah, यूएस में या यूरोप में जब भी कोई जाता है, they are like, oh, thank God, nothing came out. I'm happy. yeah, इंडिया में होता है, exactly. अरे बाप रे, कुछ निकला ही नहीं, पैसा वेस्ट हो गया. Yeah, exactly. Yeah, So, if you talk about, let's say, simple term plan, if you have to take that example, इंडिया में जनरली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस समय वो अराउंड 70 years है, 69-70 years. Now that does not mean that everybody will die at 70. Nobody dies exactly at 70, a big pool, right? So some people will die at 80, 90, 95. Many people will die at 40, 50, 30 also sometimes. So insurance is simply, as I said, right? It's a very simple product to be speaking. So insurance has to be taken for that event. As simple as that. correct. So basically, the uncertainties of life, the Yes, things जो आपको सच में नहीं चाहिए लाइफ में. yes, I mean, you don't want to die. You don't want a bad health. You don't want yeah, your car to crash. yeah. And you are And taking it at that point. and one more thing is you have to understand that, in a big pool of people, let's say 1,000 people, someone will die early, someone will get hospitalized, but who will be that person, that is not known, right? Yeah. So insurance is very simple concept where we all pull in small amount of money. Let's say we all pull 100 rupees, 1,000 people are there, and we all put 100 rupees, and 1 lakh gets created, right, as a pool. Now someone will get hospitalized. Let's say 10 people out of 1,000 people, 1% population will get hospitalized, and let's say average bill is 10,000 rupees, for example. So this 1 lakh rupees has to be used for those 10 people to pay their bill of 10,000 rupees. As simple as that. So the best part of this whole solution is that if the insurance was not there, for example, the impact on one person with whom that event happens is quite big, right? आज भी आप देख लो, किसी का भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 10-20 लाख का बिल आ गया, तो इतना बड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट? इतना बड़ा बिल देना पड़ेगा, विच इज क्वाइट हाई. बट अगर सब लोग छोटा छोटा प्रीमियम दे रहे हैं, तो किसी के ऊपर एक पर्सन के लिए ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, Hmm. right? So do you want to be part of that big pool or not? That is the question. And it is all about, insurance is all about transferring the risk also. See, a lot of times you may say, no, I'm okay to take the risk. If you're okay to take the risk, then you don't need insurance. Insurance is mainly for those people who want to transfer the risk. As simple as that. That's interesting. I think ये एक नई तरीके से सोचा है, because Yeah. till now what people talk about is the fact कि आप let's say life insurance, तो आप नहीं रहे तो आपके बाद आपकी फैमिली का देखभाल कौन करेगा and all of that. So that is basically एक Correct. एक तरीके से बोला हुआ है, but वो it doesn't appeal that much. Yes, yes. See, it's like the funny way we can explain this is कि भाई एक दिन आपको you know तलवार लगेगी और आपका गला कट जाएगा एक बार में, या तो वो ले लो, या फिर छोटी छोटी पिंचिंग एक साल में एक बार आएंगे और छोटा सा दर्द देंगे. आपको क्या चाहिए? सो अगर आप तलवार खा के पूरी खत्म होना चाहते हो तो दैट्स फाइन, यू कैन टेक दैट रिस्क. वरना छोटा छोटा प्रीमियम जैसे पे करते हैं वो छोटा छोटा आप पे करते रहो. एज सिंपल एज दैट. Correct. तो Right. उससे आप बचे रहोगे उस बड़े हमले से. So let's talk about the first and the most something that जो सब लोग करते हैं. हम्म. एक हमारी जनरेशन जो अभी आ रही है is probably not doing it as much, या but थोड़ा तो पैसा जाता है वो LIC में, because पेरेंट्स का प्रेशर होता है. इट इज या देयर. वो यस, शायद आपके पास भी और हमारे पास भी वो लोग जब भी आते हैं तभी ऑलरेडी LIC चालू होता है, उसके बाद आते हैं. एग्जैक्टली. नाउ द कॉमन मिथ इन LIC इज कि एक होता है एंडाउमेंट और दूसरा होता है टर्म. अभी वो एंडाउमेंट और टर्म का ही इनको पता नहीं होता, बिकॉज somebody just has put into their head कि investments and insurance are one and the same thing. So let's just break it down. Yeah. First of all, it's not just about LIC. It's endowment plan and all these insurance plans are mainly from all the companies. But I think we are using the word LIC because it's the oldest company and most of the people have in their portfolio. And 7-8 years back, or maybe 10 years back, when we were we were talking to a lot of people and we were seeing their portfolio. सबके portfolio में 2-3 पॉलिसी होता ही होता था, always.
ऐसा होता ही नहीं था कि किसी के पास पॉलिसी नहीं है। आजकल हाँ कम हो रहा है, मतलब पीपल हु आर कमिंग नाउ, there are chances that they don't have that old bad insurance policies. So what is endowment policy? What exactly are these plans? See, in India, or in general, I would say not just in India, humans are designed to think in a very simple terms. Like बहुत simple terms में हमको चीजें समझ में आती हैं. जैसे for example, if I tell you that, let's say you are 30-year-old, for example, okay, a 30-year-old person, if I come to you and I want to sell you insurance, I come to you and I say that आप 1 लाख रुपए 10 साल के लिए पे करो, ठीक है, हर साल 1-1 लाख रुपए, फ्रॉम 30 to 40 यू पे 1-1 लाख रुपीज, और आप जब रिटायर हो जाओगे ना 60 पे, तो आपको जिंदगी भर 2-2 लाख रुपए मिलेंगे जब तक आप जियोगे, लाइक लेट्स से 100 एज तक, ठीक है, तो एक तरह से 100 एज मतलब पूरी लाइफ ही हो गया एक तरह. नाउ इन अ वेरी सिंपलिस्टिक टर्म, if you think of this simply means I pay 10 lakh rupees, I get 80 lakh rupees. I pay 1 lakh rupees 10 times, 30 to 40, और फिर 60 से लेके 100 तक for 40 years, I get 2 lakh rupees, right? In between there is a gap. From 40 to 60, I don't get anything because it's a retirement solution. This product is a retirement solution. आप अभी कमा रहे हो, यंग हो, अभी आप प्रीमियम पे कर सकते हो, पे कर दो, 10 साल पेन ले लो, और जब रिटायर हो जाओगे तो आपको डबल पैसा मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा. नाउ इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम द एब्सोल्यूट नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट लुक्स वेरी गुड. 10 लाख पे किया, 80 लाख मिल गया. बट वेन यू put it in Excel and you ask the question that what is the return I am getting at the end of the day, because I'm just talking in the terms of absolute numbers, right? Pay 10 lakhs, get 80 lakhs. यहाँ पे रिटर्न की तो बात हुई नहीं, करेक्ट? सो व्हाट डू यू थिंक इज द रिटर्न ऑफ दिस प्रोडक्ट? जैसे एफडी में 6%, 7%, 8%, 10% मिलता है, म्यूचुअल फंड में हमको 12, 15, वट एवर ये नंबर मिलता है, पीपीएफ में 7% मिलता है. ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी बोला, ये क्या रिटर्न है इसका? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट गेस. It's very hard. I mean, Yeah, it's very hard. That is the exactly the point. That is huh, exactly the point, to throw a product जहाँ पे सोचना बहुत मुश्किल है. एक कॉमन मैन नहीं कर सकता, मतलब कॉमन पर्सन नहीं कर सकता. यू नीड टू नो द मैथमेटिक्स, यू नीड टू नो दिस आईआरआर और ये सब क्या होता है. कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता ना एक नॉर्मल इंसान. सो ये प्रोडक्ट है 4.95% CAGR. इफ यू जस्ट पुट इट इन एक्सेल एंड डू द आईआरआर कैलकुलेशन, दिस इज अ वेरी बैड प्रोडक्ट फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आप यंग हो, अभी आप रिस्क ले सकते हो, आपका मेन फोकस है पैसे को ग्रो करना है, एट हायर रिटर्न. मे बी समवन एट 60 वो ऐसा बोल सकता है कि भाई अब मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, मेरा पैसा बस हो, लो रिटर्न चलेगा, पक्का चलेगा. मे बी वहां पे एक लो रिटर्न प्रोडक्ट की कहीं गुंजाइश हो सकती है, बट इवन देन इट इज नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट. But for a young person, this doesn't make sense. So that is endowment plan, where you pay some amount for some years and then at the end you get some money back. Money back plans, इसके बहुत variations हो सकते हैं. And generally these are investment plans only. See, इंश्योरेंस में क्या हो गया, इंश्योरेंस का नाम रह गया, बहुत सारे तड़का है इंश्योरेंस का, लेकिन बेस वो नहीं, राइट? जैसे हम दाल में तड़का देते हैं ना, ऊपर तड़का थोड़ा सा रहता है और बाकी तो दाल ही होती है. वैसे इंश्योरेंस का तड़का देके एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बोलते हैं. सो एंडोमेंट प्लान्स आर सिंपली इन्वेस्टमेंट प्लान्स विद अ लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ इंश्योरेंस नाम का. सो इट डजंट फुलफिल एनी नीड. आप इंश्योरेंस लेते हो किस चीज के लिए? कि भाई अगर कुछ हो गया मुझे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली को इतना पैसा मिले कि उसके अगले 20, 25, 30 साल पूरी लाइफ उसकी सेट हो सके, उसको इनकम मिलती रहे, उसके लाइबिलिटीज जितने भी हैं वो पूरे कर सके. बट इंडिया में जो एंडोमेंट प्लान्स लेते हैं लोग, उसका प्रीमियम कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख. उसका जो अगर मरने पे कुछ इंश्योरेंस उसका मिलेगा, वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख होता है वर्स्ट केस में. ऐसे भी प्लान है जहाँ पे 2 लाख, 4 लाख भी मिलते हैं. ये पुरानी पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूँ. So what will happen with 20, 30 lakh rupees? If a family gets it in metro or tier 1 city, 2-3 साल का खर्चा निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. So it doesn't serve the purpose of insurance. And from investment perspective, as I said, return wise कुछ ज्यादा नहीं. So it's not the right product to buy. Compare that to term plan. Term plan is a very plain vanilla core product which can solve your life insurance need. It's a simple product. You pay the premium, you keep paying the premium everywhere, very small premium. And if something happens to you, a big sum assured comes to you from your family, for your family.
So just to give you an example, if a young person, let's say 25, 26-year-old, 27-year-old, just married, if he takes a term plan for, let's say, 2 crore rupees, the premium will be somewhere around what? 20,000 rupees, maybe 20, something in this range. So that is less than 2,000 rupees a month. So just think about it. By paying a small premium, if a person is earning, let's say, 80,000, 1 lakh rupees, by paying a small premium, that person has covered that big risk. If something happens to them, at least the family will survive for many, many years. This is the first step of any one's personal finance actions, and after doing this and maybe other insurance, then they have to start their investment journey. But people, what they do is they start their investment journey, invest करना है, स्टॉक करना है, रिटर्न कमाना है, 10-10 साल निकल जाते हैं और उन्होंने बेसिक फाउंडेशनल लेवल जो एक्शन है वो नहीं लिया होता. I agree. I completely agree. And when you're talking about 4.95% or less than 5%, Yeah. I think even in the worst times, bank ka FD has given more money. Yeah, So, true. and plus, when you were talking about that, ki it is hard to assess ki return percentage kitna hai, which is where I realized ki when I had started, that was somewhere around somebody had told me कि आप आगे के 35 साल तक अगर पूरे साल का 1 लाख रुपीज डालोगे, दैट इज जस्ट 8,000 रुपीज अ मंथ, इट विल कम टू यू समवेयर अराउंड 40, I think 50 or 60 lakh rupees आएगा. And it didn't make much sense when you ask that Yeah, person, he also doesn't know what is the XIRR return. What they are true. also taught is कि And अपना पैसा डाल दो इतना मिल जाएगा और one बीच में more तो तुरंत मिल जाएगा. one more thing is very important aspect in this is the time value of money, where you don't think about far in future. Because क्या होता है कि जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, 1 lakh rupees you pay at 30, like 1 lakh rupees, and you get 2 lakh rupees. What happens is right now when a person is 30-year-old, he's hearing that 2 lakh rupees, और वो 2 lakh सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि अरे 2 लाख रुपए. बट 2 लाख रुपया कब? It is after 30 years. The worth of that 2 lakh rupees is just few thousand rupees afterwards. तो आज जो आप 5,000 में कर सकते हो, वही 60 साल की एज पे 2 लाख से कर पाओगे, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है बहुत ज्यादा. एंड द अदर थिंग इज कमिटमेंट ऑल्सो. यू आर कमिटिंग योर सेल्फ टू समथिंग विच रिक्वायर्स यू टू पे फॉर सो लॉन्ग, राइट? तो आप 50 पे मर गए तो पूरी जिंदगी पे करो, 50 पे कुछ हो गया तो, 60 पे कुछ हो गया तो, जब पेमेंट आने वाला है उसी समय आपका कुछ हो गया तो, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज फ्रॉम योर लाइफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी फॉर समथिंग, सम इवेंट व्हेन यू फील हाँ वो एक दिन आएगा जब कुछ तो बड़ा होगा, मुझे पैसा मिलना होगा, और आप हो ही नहीं उस समय. Yesterday on Twitter itself, I was seeing one example where there was this guy who was sharing his policy example, and the premium payment is for 100 years, till 100. He has to pay till 100. This guy bought it at 28. It has been 15 years now. It's a small premium product, like 7-8 हजार 10,000. The guy has already paid 1,60,000 rupees, and this guy comment was as simple कि भाई ये तो बस एक like दलदल है, मैं फंस गया हूँ, अब निकल नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पे कर दिया है. तो अब ऐसा है कि भाई कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि अगर कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा. So all these aspects has to be well thought. Insurance, one has to really think hard and then get into. But problem क्या होता है, टैक्स बचाने के लिए बस ले लेते हैं हाँ. टैक्स. बस तो फिर वही होता है, सिर्फ उतना ही होता है, फिर टैक्स बच जाता है और कुछ नहीं होता. तो वही एक बहुत ज्यादा दिस इज समथिंग दैट वी वी फेस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ व्हेन जो क्वेश्चन जब भी आता है ना, यार एटीसी तो पूरा हो गया, अभी क्यों इंश्योरेंस लो इस, या फिर मैंने 1.5 लाख रुपया डाल दिया, प्रॉब्ली एन एंडाउमेंट प्लान, टर्म में तो शायद इतना नहीं होता है. बट दिस इज बिकम अ माइंडसेट कि आई एम नॉट टेकिंग इंश्योरेंस बेसिकली टू कवर माई लाइफ, आई एम ओनली टेकिंग इट टू सेव टैक्सेस. नाउ एज यू progress in your career, definitely your life value is a lot more than what it was previously. Expenses are a lot more than what they were, previously. You get married, you buy a larger house, a couple of cars. But वो जो एक mentality है ना, to take more insurance, that's not going away somewhere. So how do you tackle that point? That is because insurance is seen as the investment product. अगर आप investment product की तरह देखोगे तो वो तो लेते रहना है, बट अगर आप coverage की तरह देखोगे कि it is something which
विल पे माई फैमिली, राइट, उसकी नीड ट्रूली स्पीकिंग धीरे धीरे कम होनी चाहिए लाइफ में. इफ योर इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, ठीक है, इन द स्टार्ट ऑफ द करियर इट कैन इंक्रीज. आई अंडरस्टैंड. अ गाय, अ पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग, अभी उसको ज्यादा इंश्योरेंस नहीं चाहिए. फॉर सम ईयर्स में बी हिज इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इज विल राइज. बट अब आप 50 के हो गए हो, 45 के हो गए हो, अब आप अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हो और आपका इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जा रहा है. दैट इज अ क्लियर साइन कि आपने एसेट्स नहीं बनाया. डर क्या है कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो गया तो फैमिली क्या करेगी, तो इंश्योरेंस के सहारे रहो, राइट. सो द फर्स्ट साइन of success in wealth creation is that day when you close your term plan. आप 50 के होते हो तो टर्म प्लान खत्म करो, उसको बंद करो. वो ज्यादा एक सक्सेस पैरामीटर है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो. बिकॉज दैट इज सिंपली मीन्स कि भाई मेरा मैंने वेल्थ क्रिएट करना चालू कर दिया और वो अच्छा खासा हो गया, अब मुझे इंश्योरेंस पे की जरूरत ही नहीं है. यू नीड टू एक्सपैंड दिस अ लिटिल बिट, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. समथिंग विच ये तो हमने सुना ही नहीं है, सोचा ही नहीं है. कि इंश्योरेंस चाहिए क्यों? एक एक इंसान है जो अभी जॉब चालू कर रहा है, उसको इंश्योरेंस क्यों चाहिए? उसको इंश्योरेंस इसलिए चाहिए क्योंकि उससे पैसा नहीं है, करेक्ट. जॉब करते ही अगर 5 करोड़ आ गया, जॉब चालू किया और 5 करोड़ है, तो इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो 5 करोड़ जो है वो फैमिली की, इट विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, बट दैट 5 करोड़ इज नॉट देयर. Hence, I have to depend on insurance. Understand? Next year, let's say not next year, in next 5 years, let's say, I create one, let's say 50 lakhs of wealth, for example, which means मेरे पास 50 lakhs है, करेक्ट. लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा है, बहुत नहीं है. तो वो जो गैप है ना, मेरे फैमिली को 5 करोड़ चाहिए लेकिन मेरे पास तो 50 लाख ही है, तो 4.5 करोड़ का अभी भी गैप है, तो अभी भी इंश्योरेंस चाहिए. व्हाट हैपेंस आफ्टर अनदर 5 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपीज, तो अब उसके पास पैसा है. So which means कि your wealth has to go up, right? So that one day it is enough to take care of family. That's brilliant, I think. Yeah. So इस पे जनरली हम यही क्वेश्चन, हम कई बार जब वेबिनार्स करते हैं या फिर कुछ सेशंस करते हैं तो वी आस्क द क्वेश्चन कि मुकेश अंबानी को कितना इंश्योरेंस की जरूरत है. तो पीपल से 10 टाइम्स देयर इनकम. क्योंकि जनरली जो इंश्योरेंस सेलर्स हैं जो आके इंश्योरेंस बेचते हैं, वो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सर आपकी इनकम क्या है, साल का 12 लाख रुपया, तो उसका हाँ, 10 टाइम्स कर दो, एक 1.25 करोड़ का आप इंश्योरेंस ले लो. सो ऐसे, सो दैट्स द पॉइंट. इनकम से आपका इंश्योरेंस नहीं डिसाइड होना चाहिए, आपके correct. एक्सपेंस से डिसाइड होगा, आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट से डिसाइड होगा. Hmm. I personally don't. It's I understand it's a very high level thumb rule, एक बेसिक आइडिया देता है, बट Hmm. आपके फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है उस पे इंश्योरेंस डिपेंड करेगा, आपके इनकम पे नहीं होगा. That is, that makes a lot of sense, and that eases out a lot of pressure. या और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने बात कहा कि अगर 50 तक आप अपना टर्म प्लान बंद करते हो, दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड इनफ एसेट्स कि अभी वो एडिशनल पैसे से कुछ नहीं होगा, आपके पास इतना इनफ मनी है. या ओके. सो सो जस्ट एक कैलकुलेशन देख लेते हैं. मतलब आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी हाउ मच टर्म प्लान, मतलब टर्म प्लान लेना. लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, हाउ मच लाइफ इंश्योरेंस वन शुड टेक. नाउ in a very simple way, if you ask this question, a person, if the person is missing in his life, like अपने फैमिली में वो जो मेन ब्रेड विनर है वो कल को नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मर गया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो क्या क्या होने वाला था फ्यूचर में, वो क्या करने वाला था, कमाने के बाद वो करने क्या गया वाला था. सबसे पहली चीज वो अपना लोन खत्म करने वाला था. फैमिली पे लोन नहीं होता, धीरे धीरे वो ईएमआई से खत्म कर रहा था, राइट. सो जो लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन, वो खत्म होना चाहिए. दूसरी चीज होनी चाहिए कि फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स की जो वो इनकम ला रहा था और फैमिली को जो एक्सपेंस में हेल्प कर रहा था, वो पूरा होना चाहिए. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. एंड एनी बिग एक्सपेंस विच इज गोइंग टू कम अप, लाइक किड्स एजुकेशन इज देयर, यू हैव टू बाय अ हाउस, तो वो इंसान जो मेन ब्रेड विनर जो जो करने वाला था अपने फैमिली के लिए, आपके पास जो पैसा है वो सब अचीव करना चाहिए. तो वेरी बेसिक फ्रेमवर्क इज वेरी सिंपल. यू मल्टीप्लाई योर मंथली expenses into 300 or 400, for example. You add your outstanding loan amount and you take one other lump sum figure which can help you with your major goals. So I'll give you an example. If someone monthly expenses, let's say 50,000 rupees a month, 50,000 rupees में उसका घर चलता है, उसका जो घर में जितने लोग हैं उसका एक महीना अच्छे से चल जाता है. सो 50,000 multiplied by 300, okay, that is 1.5 crore rupees.
So this 1.5 crore rupees is enough to provide a inflation adjusted income of 50,000 rupees for next 20-30 years. Okay. I'm just doing a very high level calculation. So that is 1.5 crore rupees. If the person already has a loan of 50 lakh rupees, for example, so that also needs to be cleared. So you add up that 50 lakh also. So 1.5 plus 50 lakh becomes 2 crore rupees. And on top of that, you add another 40-50 lakh rupees, because that 45-50 lakh rupees will act as a buffer, for example, or it will help to, fund the kids education or any other major work. So roughly this person needs 2 to 2.5, 3 crores. That is the range. And so just put your numbers, and it's a very simple framework to find out how much insurance you need. I think that's really brilliant. Really, really brilliant. I think thumb rule तो ये होना चाहिए rather than Yeah. 10 income. So Yes, income से बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, एक्सपेंस पे बात करो. So there's a question on the chat on the box जो Tingly का app है ना वो app box पे there is a question कि there's this guy called Chirag. He wants to know कि what should he do if he needs to file a claim and what is the process? Claim for which insurance? Term plan? He's not written anything. So Chirag, if you Okay. would want to write right now, or we just give you a general answer, let's go with the general answer. So in any insurance, I'll give a general answer only, because in any insurance, there is a claim form. First is the claim form, where you contact the company and you fill the claim form. And in the claim form, you give all the basic details, like, like in any insurance claim, you get the money back, right? It's a term plan. Hai. If the person is dead, his family will file the claim. In health insurance also, the same person or the family can file the claim. So you fill the claim form, and apart from that, you have to put some documents. So if we talk about term plan, let's talk about term plan. If the person is dead, you have to fill the claim form, you have to put the death certificate, and you also have to give the KYC document of the person who is filing the claim. So if the husband is dead, the wife or parents or children will file the claim. So death certificate, the claim form, and the KYC documents of the person, like Aadhaar card, PAN card, and the bank details where the money has to come. So I think this is very high level. It's a simple process, truly speaking. Sometimes it can be a little complicated. There can be additional questions which can come from the insurance company. There can be follow-up involved. But document-wise, this is the process. We have done this process for our clients. Okay, that's good. So some of our clients, unfortunately, some of them died due to medical reasons, and we helped their families to file the claim. So we did this process, and in one of the case, the insurance company said that the money will come after 6 months, and they were giving some reasons, and we followed up, and we reached out to the right authority, and then we got the claim in next 20 days itself. So if you want, Chirag, if you want to know more, you can just write to him at manish@jagoinvestor.com. Yeah. Manish will be more than happy to assist you if there is anything. So Manish, there is another question from Alicia. Yeah. She's saying, and it's a very interesting question. ये आजकल बच्चे लोग हैं ना, they bring us back to the basics of life. तो Alicia का question ये है कि how do I make sure I'm not overpaying for my insurance coverage? मैं बोला नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये हमको सोचने में मजबूर करते हैं आजकल. Yeah, which insurance, if she had mentioned which insurance she is talking about, that would be really great. But see, the concept is very simple. There are different insurance companies, okay, in the market, and they all have something called as underwriting. Underwriting is a process where they evaluate the risk you have for them, right? They decide the premium, कि आपका एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पास्ट इलनेस क्या है. Based on that, they will decide the premium. Now, the spectrum of insurance can be very, very wide also. Like, for example, in term plan, for 1 crore term plan for a 30-year-old person, it can start from 8,000 also. And then it can go to 8,500, 9,000. And then it can go till 15 also, 15,000, 20,000 also. Now, for something like term insurance, you don't need to judge it on the premium, because a lot of times some company may have a very high premium simply because brand name बहुत ही trustworthy है. मतलब
ट्रस्ट का फायदा उठाना है। लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज जो है इंडिया की, उस पे इतना विश्वास है कि उनको ऐसा है कि भाई प्रीमियम ज्यादा रखेंगे क्योंकि लोग तो लेते हैं हमको ही, तो ठीक है ना, उसका फायदा उठाओ। तो अगर आप इस तरह से ओवर ट्रस्ट करेंगे तो फिर आपको पे करना ही पड़ेगा। गो विद द बेसिक्स, डोंट वरी, बिकॉज ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय आईआरडीए। जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फाइलिंग है, जितने भी ये सब रूल्स हैं, वो सबके लिए कॉमन है। सो देर इज अ कॉमन मॉनिटरिंग, so you don't have to worry too much on the premium. Yes, you have to see the product. Sometimes what happens, a lot of times product variation happens, like जैसे health insurance में बहुत होता है। Health insurance of 10 lakh rupees from company A and company B is not exactly the same, because उसमें कुछ फीचर अलग हो सकता है, एक रूल यहाँ पे कुछ अलग है, वहां पे कुछ अलग है। सो उससे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, वहां पे अलग अलग प्रीमियम हो सकता है। बट टर्म प्लान जो है वो बहुत ज्यादा आई थिंक डिफरेंट नहीं है। उसमें आप यू कैन जस्ट गो विद the company which you trust, truly speaking. So all the big brands, old companies, you can. I don't know if I've answered that. And you have completely answered the right way. I'll just answer them in a wrong way. निशा का भी सेम क्वेश्चन है, तो निशा एंड आयशा, इफ यू डोंट वांट टू ओवरपे, डोंट स्मोक, बिकॉज इफ यू स्मोक Yeah, कभी yeah. So करना हो okay, जाएगा। okay, okay. If that is how it has to be answered, obviously, see, आप रिस्क मत बढ़ाओ। आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अगर आप बढ़ाओगे तो इंश्योरेंस कम होगा, सिंपल। जस्ट आप डोंट डाई। नहीं, हाँ हाँ हाँ, अगर डाई हुआ तो फिर मतलब बहुत लेट हो रहे हैं, और डाई तो फिर तो फायदा नहीं है किसी का, मतलब आपका तो नहीं है क्योंकि आपने 20 साल प्रीमियम भरा तो। बट स्मोक नहीं करो, डोंट टेक अल्कोहल, yeah, I think, and just be fit, be healthy, because once there are illnesses, and after that if you go for insurance, obviously the premium will be on a higher side. तो बेसिकली आपको कम प्रीमियम रखना है तो आप जीना बंद कर दो बस, मतलब डोंट लिव you लाइफ। can look at that. हाँ I would say अगर आपको ये सब करना है तो पहले इंश्योरेंस ले लो और फिर ये सब करो। हाँ, यस। डोंट Fool डोंट the लेट company, देम नो। fool the companies. No, करेक्ट। but what I'm saying is factually it can happen. मतलब ultimately या insurance जो होता है, it only covers the future, it doesn't see the past. So past के ऊपर आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। So someone, if they truly want, they can take the insurance and they can smoke, they can do everything, and that will all be covered. आप तेल मसाले वाला खूब खाओ और एक्सरसाइज मत करो और सब हो जाएगा, फिर भी इंश्योरेंस कवर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। राजेश का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा अपन ने उस पर बात किया था, बट ही इज जस्ट वांटिंग टू अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी। इट सीम्स की हाउ कैन he ensure that his insurance coverage is basically keeping up with the changes in his life? तो जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, करियर के चेंजेस हो गए, so how does he make sure कि वो So, insurance? so one request to everyone is, when you ask this question, please mention which insurance you are talking about. Are you talking about term plan? Are you talking about health insurance? Are you talking about some other insurance? Because answer will change. So insurance is a contract, okay? But when you take the insurance now, at that point, what is the situation? At that point, what is your health? At that point, what is the situation? On that, your premium will be calculated. In future, if your circumstances changes, everything changes, then the calculation is very different. So you can't take a term plan at 30 and at 40 you can just say कि हाँ अभी इसको बढ़ा दो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। So you take a term plan at 30, and if at 40 if you want to increase your cover, you buy another 1 crore of term plan. So you buy two insurance, those two insurances are different. Okay, there's no concept of increasing the cover in term insurance. In health insurance, you can definitely increase the cover. Your 10 lakh policy can become a 20 lakh policy, but then additional 10 lakh which you take, that will be given based on the underwriting which is happening at the time of taking the additional cover. So if you are healthy, I'll give you an example. If you are healthy, you take a cover, and after 5 years, if you want to increase it, then in this 5 years, if there is any illness, if there are any health issues, then your premium will drastically get impacted. And it may happen that it may be denied also. कि नहीं आपको additional हम तो नहीं देंगे, आप कहीं और try करो. That may happen. So just keep calculating your coverage every 3 years, 5 years, and if there is a gap, you take it.
But in health insurance, if I specifically talk about health insurance, I personally believe that, one should take a larger cover, something which they may need for next 10, 15, 20 years, and not just depend on the current situation. So in today's terms, 5 lakh seems fine कि यार ठीक है, 5 lakh का ठीक है, 10 lakhs का ठीक है, बट आज वो ठीक है, 5 साल के बाद आपको यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार थोड़ा और लेना चाहिए था, 15 ले लेता, 20 ले लेता. तो आई वुड रियली रिकमेंड, इफ यू आर टेकिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, गो फॉर अ हायर कवरेज. इट्स लाइक लॉकिंग इन द सम एश्योर्ड. आज आप 50 लाख का ले लोगे तो 50 लाख का मिल गया, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा, बट देन इट्स अ पे ऑफ, मतलब आज आप पे कर रहे हो फ्यूचर के लिए. सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस. इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू डिस्कस. तो इसके ऊपर ना किसी दिन और एक एक डिटेल्ड डिस्कशंस लेंगे. देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आयशा. अभी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जब आप बात करते हो तो व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स और व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड? सो ट्रूली स्पीकिंग, लाइफ इंश्योरेंस में ना जनरली फर्स्ट ईयर में सुसाइड नहीं कर सकते. मोस्टली ये एक्सक्लूजन है. नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ. Okay. दिस इज द रूल. 1 साल बाद सुसाइड इज नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर. आफ्टर दैट इवन दैट इज कवर्ड. Generally, if the death happens for any reason, I think mostly it is covered. Even sometimes, because of the natural calamities, even though sometimes it is written that it will not be given, but we have seen that, in a lot of cases on humanitarian ground, जैसे कोविड में हुआ कई बार, even चेन्नई फ्लड्स में हुआ, companies pay a lot of times. So mostly it's a very simple product. कुछ हुआ आपको तो पैसा मिल जाएगा. The only thing is, और लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो इवन IRDA का रूल है कि अगर 3 years के बाद आपको कुछ भी हुआ तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है. इवन आपने कुछ बेसिक गलती कर दी, हेल्थ का कुछ बताना भूल गए थे, तो इवन दैट विल बी कवर्ड. सम एक्सट्रीम केसेस मे नॉट बी कवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ फॉर एग्जांपल, तो उस केस में ऐसा हो सकता है, बट जनरली बाकी सब कवर्ड टर्म प्लान के. And if you talk about health insurance, this is just my knowledge. हेल्थ इंश्योरेंस इज ट्रूली स्पीकिंग अ बिट कॉम्प्लेक्स. उसमें इतना सिंपल आंसर नहीं दिया जा सकता. बट हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन के बाहर कुछ कर रहे हो तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत वैसा प्लेन आंसर नहीं है उसका. उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट? कि जैसे फॉर एग्जांपल when you take a health insurance, there are many times things are not covered for the first 2-3 years. Some of the illnesses, for example diabetes, for example, it will not be paid in the first 2 years. That is one. So ऐसे कुछ clause हो सकते हैं जहाँ पे नहीं पे होगा. And let's say when we are talking about अनिकेत का ये क्वेश्चन है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, Yeah. तो do policies like really vary when you take it as an individual or a family business का कुछ अगर है तो I don't know how does that work? No, if we talk about term plan, there is no concept of joint insurance. I think there are 1 or 2 plans like that, but in general, in term plan, you get a single policy for one person. Okay, so husband and wife together cannot say कि हाँ हमारा एक policy है and if anything happens to one person, it will be. It's not like that. In health insurance, definitely there is a concept of family health insurance where you take a cover for entire family, or you can take it just for one person. But I think there is no difference as such. It's a blanket cover where all the people are covered for that same cover amount. If you go into detail, I can answer. It's a very vague question to this speak. क्वेश्चन ही वेग रखा है कि Please, anyone who is asking, just give more details. Be very specific so that it can be answered. ठीक है. एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है साक्षी का. साक्षी, there is nothing called bundling of insurance policies with any provider. You should not do that. I mean, do people really do that? Bundling of insurance, is it? हाँ, advantages of bundling insurance policies with one provider. I didn't get it, what it means. वो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कि why do you need to bundle insurance policies with one provider? I think ना, हाँ, साक्षी का ये क्वेश्चन खोटा नहीं है. I'll tell you, मेरा एक ना मासी का भाई, मतलब मासी का लड़का है, and he doesn't listen to my podcast, so I am very happy. I can tell you. मेरा cousin है, every year ना he takes one new insurance policy. So Sakshi's question is very relevant. Sorry, Sakshi, but वो हर बार I think what
So it is called as staggered insurance. So what people do is हाँ you buy a policy at 30 for 30 years, then at 31 for 30 years, then 32. So what will नहीं, happen is once you turn 60, आपको हर साल मैच्योरिटी में पैसा मिलते रहे, वो 61 वो पे भी मिले। है, पर आई टेल यू मेरा भाई क्या करता है, मेरा भाई ना, उसकी हर साल वो एक इंश्योरेंस वाली आती है, इंश्योरेंस की एजेंट आती है. It's that is wrong. That insurance agent comes. Yeah, तो हर साल उसको बोलती है कि अपने पास ना अभी ये वाले पॉलिसीज हो गई हैं, अभी एक नई पॉलिसी आई हुई है, yeah, yeah. तो आपको ये वाली पॉलिसी में पैसा डालना चाहिए, तो आपका इंक्रीमेंटल है ना, इतना कुछ खास नहीं है. एंड शी ऑल्सो टेल्स हिम कि अगर आप एल आई सी वाला ही ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला ले रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी उसका ऑलरेडी इतना है, तो आपका प्रीमियम उसमें कुछ 20-30% उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. सो दैट पुअर फेलो इज नॉट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो पूरा पैसा एल आई सी और इंश्योरेंस में ही जा रहा है कौन सी कंपनियों में. सो ही दिस इज दिस इज व्हाट आई प्रॉब्ली शी इज टॉकिंग अबाउट, कि वो बंडलिंग हो जाता है वहां पे, कि वो आपका एक एल आई सी का प्लान चालू है, एंडाउमेंट चालू है, मनी बैक चालू है, फिर चिल्ड्रन का भी पॉलिसी ठोक दिया उसमें साथ में. मैं बताता हूँ इसका इसका हाँ. मतलब इसका बहुत अलग तरीके से मैं आंसर दूंगा कि कई बार क्या होता है ना, बहुत अच्छी कोई बुक लगती है ना, तो हम खरीद के रख लेते हैं, फीलिंग आती है कि हाँ मैं अब और पढ़ रहा हूँ, फिर अगले साल कुछ और अच्छी बुक लगती है वो भी खरीद लेते हैं. सो बस खरीदते जा रहे हैं, कुछ काम का नहीं है मतलब. सो आई थिंक इट इज नॉन प्रेजेंस ऑफ deep interest in their financial life. The person you're talking about, they're just not very serious about what they are doing with their money. कोई आया, trust है. See, trust रखना is fine. That is not an issue. But first verify na what you are doing. Is it the right product? What it will do? People don't ask question, truly speaking. Just ask how it will help me in my life. If it helps, it's fine. So right now wealth creation तो हो रहा है, but सामने वाले के लिए. So, so if you're a LIC shareholder, my brother is contributing to your life. So with that, Manish bhai, it's आपको all आई good. जस्ट एंड दिस विद या जस्ट लास्ट थिंग, आपको ज्यादा इंश्योरेंस नहीं चाहिए. एक टर्म प्लान लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस लो, एक कार इंश्योरेंस लो, बस हो गया. Yes, absolutely. So, what I've understood from today's discussion is कि अपने तो और 5 points थे वो रह ही गए. And what I understand is everybody is more interested in knowing about this. बहुत ज़्यादा यू नो क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी भी कम है कि एंडाउमेंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. तो ये सारी चीज़ों पे इज व्हाट द फीडबैक दैट आई हैव गॉटन टुडे फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड इज we might need to have a session where we tend to go a lot more simpler, hopefully if we can. Yeah, And with that, let me just call it the day. yeah. I think Manish bhai, you've really given us your time, Thank you. your wisdom, your years of experience. And there's no doubt, I mean, when Nandish bhai calls you the Steve Jobs of personal finance, and even I feel it every single time when I talk to you. I mean, this is what happens. This is what the folks have seen today. But generally, this is what happens when we come to you with 10 points. आपका पहले 2-3 में इतना अच्छा elaboration होता है, आगे के जो होते हैं, वी हैव टू स्टिल कम बैक टू यू विथ मोर क्लैरिटी कि अच्छा हमको तो इनके पास और चाहिए. So with that, let's end today's session with Yeah. a promise that Okay. we'll have Manish Chauhan back. Thank you. Thank you. It's always pleasure to talk on personal finance. I really love it. And I would like to just end this with one example if we have 2 minutes. In the start, I said, right, people don't buy insurance because of over optimism. कि यार कुछ नहीं होता. I'll just give one real life example. My roommate, when I was in college, I was living with 2-3 people. One roommate of mine, he knew that we are into personal finance. He came to us just to ask कि यार कौन सा insurance लेना है, life insurance, okay? And I personally gave him a very good suggestion of one policy कि यार आप ये 2-2.5 करोड़ का आपका रिक्वायरमेंट है, ये आप ले लो. एंड उसने बोला हाँ यार ये ले लेता हूँ. तो that is how it went. And in COVID, he was hospitalized. Okay, he was hospitalized, and he eventually was on ICU for 20-30 days, 20-25 days, and he died. He was 42, 42, 43. Yeah,
42, 43. So he is survived by wife and a 2-year-old daughter. And then we started to, find out the policy number and how to claim and all. And there was no way how to find क्योंकि वो details नहीं थी कहीं पे. And then I went back to all my emails and all, and then I realized that he did not take the policy. He was not having life insurance. मतलब I gave him suggestion, but then I did not follow up because it felt कि यार उनको बहुत ज्यादा क्या बोले, उनको बता दिया, and I had explained very well कि इसकी importance क्या है, but he did not take it. So that is, I just wanted to give a real life example of how you are over optimistic about future and things can go wrong. And when things go wrong, just think वो 10, 15, 20 हजार का प्रीमियम क्या वैल्यू रखता है compared to what happened in his family life. So please don't do this. Insurance is a very foundational level action. Please take it. And in case you need help, if you don't understand, go to an expert. Please go to an expert. If you can't do it yourself, take it from the expert. That is fine. Their team will help you. Even we at Jagoinvestor help people to take term plan, health insurance, or anything like that. So people can do that. I think sure. I mean, thank you, Manish bhai, for sharing such a personal experience. It's very hard, losing a friend like that. Yeah. Yeah. I know how hard it is to even recollect and talk about it. True. Thank you so much for that experience. And with Sure. that, let's call it the day. Yeah. Okay. Bye. Bye.